So I'm about to share my whole screen. Are you able to see the immune system? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. So today, basically, before we go, this will cover a lot of parts of your immune system. So let me start. So this, what do you mean by immune system? Immune system actually is a system which fights against external forces which are attacking your body. Not only external forces, it also functions internally. It attacks internal problems also. So it is rather than an organ system. What do you mean by an organ system? Like a digestive system, it has got your stomach, it has got your livers, it has got your pancreas. All these are parts of the digestive system. These have got left several organs. Immune system is not an organ system. It is a functional system. It's a functional system. It has got a hematopoietic system. That means it has got a connection with all your mm, blood forming cells, different blood cell forming cells, vasculature, all your arteries, veins, and also the lymph nodes. So broadly, you can divide the body's defense system into two parts. One is the innate defenses. Innate means inside, inborn, inherent. And you have adaptive. This is learned. The body adapts. A new pathogen comes, it adapts. It learns how to fight with this pathogen. Are you able to see this yellow marker moving around? Yes, sir. Yellow pointer, okay. So the innate defenses include the skin. What are the innate? The skin, the surface barrier. That is your skin. Tumhara chamda, it doesn't allow many things to enter. It has got certain conditions. It doesn't allow many things to enter. Mucous membrane inside your nose. You have this mucus, that slimy thing inside your nose, in your membranes. All bacteria, virus which comes, they get stuck over there. So there, that is also a barrier. Apart from that, internal defenses include uh, phagocytes. That is, they eat all the any pathogen which comes. These cells come and eat. Then you have a thing known as fever, bukhar. So high temperature. In high temperature, what happens? Many bacteria, virus, many pathogen, they don't survive high temperatures. Then you have NK cells, natural killer cells. They kill whatever comes inside. Then you have several antimicrobial proteins. There are several proteins inside your body which kill. Then you have inflammation. फूल जाता है. चोट लगने पे फूल जाता है. चोट लगले फूले जाए. So you have inflammations. Then you have adaptive defenses. So adaptive defenses include humoral immunity. Humoral immunity includes immunity provided by B cells. And cellular, then another adaptive defense is cellular immunity. That is, it provided by T cells. It is provided by T cells. Cellular immunity. So B cells, they give antibody. T cells, they directly go and attack. We will learn about B cells and T cells. Then a difference between innate and adaptive immune system. So the innate immunity is the structural defenses. It responds to non-specific foreign substances. Non-specific foreign substances. So anything which is foreign, which is coming out, nothing specific. Any microbe which comes, this innate system is activated. It is also the first line of defense. And it includes the external surface epithelial and membranes. And then you have the second line of defense.
First line is the external, this immunity, it's got the first line of defense, that is your external surface epithelial and membrane. The second line is the inflammatory process. हाथ फूल जाता है, एवरीथिंग, चोट लग गया, फोड़ा हो गया, हाँ, फूल जाता है, रेड, हॉट, सोरनेस. So you have several antimicrobial proteins. So the different proteins are secreted. Anything foreign which comes out, they cannot survive. Then phagocytes, they eat all these external pathogens, etc. All these things. Then the adaptive is like in the innate, it was non-specific. Anything bahar se kuch bhi aa jaye, it'll attack. And adaptive is for specific. अगर मलेरिया है तो ओनली अगेंस्ट मलेरिया, अगर ई कोलाई है तो ओनली अगेंस्ट ई कोलाई, एनी बैक्टीरिया ओनली अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया. It is specific, and that this specific is only against a particular, like for your against your COVID, you have this covaxin released antibody, and that is because you have these B cells, and you have another group of cells known as T cells. That is these B cells, what they do, they secrete antibody, and these antibody go and attack and attach to your pathogens and immobilize them. Usko rok deta hai. And you have the other way, you have the cellular immunity, the T cells. Both this innate and adaptive mechanisms, they work together. Pehle some maybe and pathogen enters your body. First line of defense and the second line of defense of innate immunity, non-specific, आके रोकने का कोशिश करता है. फिर भी अगर घुस गया अंदर में, अगर just by chance something has come there, it goes inside. Against it, antibodies and T cells against that particular specific pathogen, it is formed. Is it clear? Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Please respond. अगर समझ में नहीं आया बोलना. Okay. So let us talk about the surface defenses of innate immunity. First, the skin. Skin is a physical barrier. It's the first line of defense. Physical barrier रोक देता है. Skin को भेद करके जाना मुश्किल है. The keratin which is on your skin, it is resistant to most bacterial enzymes and toxin. If a bacteria wants to enter, वो toxin, lysine, enzymes देता है digest करके घुसने के लिए. लेकिन ये जो keratin covering है, it will not allow. And ये skin से जो secretion निकलता है, what the secretions which come out from your skin, they are acidic, pH 3 to 5. They cannot survive. Anything cannot survive. Then the mucosa, the mucus. So जो सर्दी जुकाम से जो नाक से निकलता है, that is the mucus. That is a physical barrier. It produces a variety of protective chemical. नाक के अंदर जो the mucosa which is there, it doesn't allow harmful things to go. Then you have the gastric mucosa. पेट के अंदर भी you have these mucosa. It is very acidic. And proteolytic enzymes. Proteolytic enzymes are enzymes which digest proteins. So the bacteria gets digested away. Then our saliva, lacrimal fluid, आंख से जो पानी निकलता है, they contain lysozyme. Lysozyme सबको, it's got very acidic enzyme. It breaks down everything. Then the mucus, it traps bacteria and moves them away from the epithelial surface. Something stuck in your throat, खास के जो थूक निकलता है mucus से, that all the bacteria virus gets out. So the innate, now we are talking about internal defenses. So internal defenses, it is based on surface carbohydrates, glycocalyx. So a bacteria pathogen which enters on its body, on the surface of the membrane, you find things known as glycocalyx, these glycoproteins. These surface carbohydrates, these glycoproteins are attached, the green color things. दिखाई दे रहा है ना green color? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the cell, the body, it is recognized as अपना है या पराया है, self or non-self.
अगर सेल्फ है इट विल नॉट अटैक, अगर नॉन सेल्फ है वो बचपन से ही सीख जाता है, सेल्फ नॉन सेल्फ एकदम टारगेट अटैक करके मार देता है। ओके, सेल्फ को इट डजंट अटैक, बट नॉन सेल्फ कुछ भी हो, नॉन सेल्फ बाहर से कुछ भी आया, से को दूसरे का किडनी तुम्हारे अंदर लगा दिया, वो नॉन सेल्फ है, उसको खत्म कर देता है, किडनी रिजेक्ट, ऑर्गन रिजेक्शन बोलता है। So you have to give immunosuppressive drugs in order to sort of uh, stop this immune rejection. Then innate internal defenses, phagocytes होता है, phagocytes, phago मतलब खा लेता है। Cells are macrophages, they are derived from monocytic cells. There are free macrophages which roam throughout tissues. सब tissues के अंदर में macrophages घूमता रहता है, they move about. Then there are fixed macrophages known as Kupffer cells. They are found in the liver and in the brain, microglia cells in the brain. What they do, they ingest cellular debris, foreign materials, bacteria, fungi. फिर the next type of cells are neutrophils. वो भी pathogen को खा लेता है, they ingest pathogens. Then you have eosinophils. They are weakly phagocytic of pathogens. What they do is they attack parasites. They degranulate parasites. फोड़ देता है, सब निकल जाता है अंदर से. Then you have mast cells. They phagocytic of various bacteria. They consume various bacteria. So how does this mechanism work? Phagocytic mechanism. First step is adherence. कोई बाहर से इन्वेडर आया, द सेल बाइंड्स टू द इन्वेडर. दिस इज aided by opsonization. We will understand what opsonization is. It is a chemical process that enhances binding via complement and antibodies. A pathogen has come, several antibodies specifically bind on that. Antibody bind होता है, all the antibody coating form कर लेता है, it forms a coating. Opsonization, पैथोजन के ऊपर कोट फॉर्म कर लेता है, एंटीबॉडी का कोट, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन. और एंटीबॉडी का जो पीछे का पोर्शन होता है, पीछे पेचनर पोर्शन था, द बैक साइड, दैट एक्टिवेट्स अ सेट ऑफ प्रोटीन्स नोन एज कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट जब भी आके बाइंड करता है, फाड़ देता है एकदम, ওটা ফাটিয়ে দেয় সেলকে, হ্যাঁ, the cell gets ruptured. So the first thing is adherence, उसको रोक के रखता है. Cell binds to the invader. Then next is ingestion, formation of phagolysosomes. इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट. जो फैगोसोम होता है, जो उसको ले लिया अंदर में, एक फोटो में दिखेगा अभी, ये देखो. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये माइक्रोब घुस गया सेल में, माइक्रोब आया, दिस फैगोसाइट, दिस इज द फैगोसाइट सेल. फर्स्ट स्टेप, microbes adhere to the phagocyte, रुक जा गया. Phagocyte forms pseudopods that eventually engulf the particle. Particle is inside. It forms a phagosome. A phagocytic vesicle is formed, contains the antigen. Third is phagocytic vesicle is fused with a lysosome. एक lysosome, it has got lots of digestive enzymes. दोनों फ्यूज होता है, both of them fuse and they form a phagolysosome. A phagolysosome is formed. They have got lots of acid hydrolyze enzymes. It is all digested and broken down, and indigestive material is removed out. This is the mechanism of phagocytosis. Yeah, clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then you have the natural killer cells. These NK cells, they are known as. They are a small population of large granular lymphocytes. Lymphocytes are a type of blood cells, white blood cells. They are non-specific for non-self. Any non-self, उसी को अटैक कर देता है, natural killer cell. Not phagocytic.
Attack is by release of perforins. You look, what they do, they release perforins. What they do, they target the plasma membrane, make holes in them. After they make holes, uh, membrane फट जाता है, everything leaks out and the cell dies, pathogen dies. They release chemicals that enhance the inflammatory response. Some interleukins and all these are released, उससे inflammation हो जाता है, फूल जाता है, लाल हो जाता है, चोट लगने के बाद पता चलता है, फोड़ा होता है, हाँ, तो फूल जाता है. What is now inflammation? Inflammation is a tissue response to injury. कुछ भी इंजरी हुआ, टिश्यू का एक रेस्पॉन्स होता है, ट्रिगर्ड बाय इंजरी, ट्रॉमा, हीट, केमिकल इरिटेशन, इन्फेक्शन. फोड़ा जो होता है, दिस इन्फ्लेमेशन, फूलना, इट हैपेंस. इन्फ्लेमेशन इज गुड बिकॉज तुरंत इमोबिलाइज कर देता है. व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स? इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इंजरी. वहां पे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, दूसरे जगह से जल्द इन्फेक्शन कैन नॉट गो टू अदर प्लेसेस. Then it disposes of cellular debris and pathogens. सेलुलर डेब्रिस, पैथोजेंस वहां से निकल जाता है. एंड इट, वहां से जो इन्फ्लेम होता है, दैट प्लेस बिकम्स इमूवेबल. थोड़ा सा रिपेयर होता है, रिपेयर करने का जगह है. अगर ये वहां वहां पे पेन नहीं है, तुम हिलाओगे तो और भी तो खराब हो जाएगा. इट उसको रोक के रखता है, फूलने से तुमको हिला नहीं पाओगे. So there are some cardinal signs of inflammation. Inflammation, how do you understand what this is inflammation? लाल हो जाता है, it becomes redness. गरम हो जाता है, फूल जाता है, swelling, and it starts to pain, ব্যথা হয়. And functional impairment, rigor, हिला नहीं पाओगे. अगर रिस्ट में चो फूल गया, तुम हाथ हिला नहीं पाओगे. That is known as rigor, rigor. So what are the inflammatory response? Signs are associated with vasodilation and increased vascular permeability. Vasodilation means your blood vessel constricted है, वो थोड़ा सा dilate हो जाता है, फूले जाए, it becomes more dilated. Blood vessels become more dilated और फूले जाए. After it is more dilated, বেশি ফুলে গেলে কি হয়, ফাঁক ফাঁক হয়ে যায়. More vascular permeability, other things from outside can enter into your blood vessels in the region of inflammation. Dilation is with redness and heat. Then permeability, edema is formed. फूल जाना edema बोलते हैं. Increased pressure, pain is also associated with bacterial toxins. There are some mediators, some kinins and prostaglandins, इससे pain response बढ़ जाता है. Some prostaglandins are released which cause this inflammation and the pain response. There, so you will not touch that region. You will try to protect that region if you have pain in that region. So the mechanism causing vasodilation and vascular permeability. Injured cells release inflammatory mediators. The cells which are injured, they release some chemicals which cause inflammation. What are the chemicals which cause inflammation? Histamine, सर दर्द होता है. काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनी फोड़ा फोड़ा होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन पेन होता है. पेन किलर करते हैं, दे सप्रेस दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स when you take painkillers. Then complement, we will understand what complement is later. Huh? They come and they try to protect. Then you have cytokines. They are also activated by receptors on macrophages in response to the microbial glycocalyx. Cell surface में go glycoprotein, the ones which you have seen, their cytokines are released in response to them. Now, what is edema? फूल जाना. It dilutes harmful substances. Some bacteria, virus there फूल गया है, तो उसको dilute कर देता है. It's not concentrated in one place. It provides nutrients and oxygen for repair. It enhances the entry of clotting protein.
सो एपिथेलियल ब्रीचेस, जो एपिथेलियम, जो बाहर का एपिथेलियम जो ब्रीच होता है, जब ब्रोकन होता है, दे स्टिमुलेट बीटा डिफेंसिन रिलीज फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स. अनदर केमिकल इज रिलीज, बीटा डिफेंसिन. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. सो इन्फ्लेमेशन, फर्स्ट टिश्यू इंजरी, ये कट गया. टिश्यू इंजरी, फर्स्ट थिंग होता है रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स. हिस्टामिन, कॉम्प्लीमेंट, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है. नेक्स्ट यहाँ पे होता है रिलीज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर. नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज ने क्या होगा, वैसोडाइलेशन, द आर्टरीज फार्टेज फूल जाता है. इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी होता है. They attract neutrophils, monocytes, and lymphocytes to the area. Chemotaxis. Chemotaxis is movement. Neutrophils are attracted by injury. Some chemicals are released at the site of injury, which attract the neutrophils. फिर वैसोडाइलेशन होने से क्या, व्हाट हैपेंस, लोकल हाइपेरेमिया. सो क्या होता है उससे, उसका मतलब इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया. ज्यादा ब्लड आ जाएगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, खून लाल हो जाएगा. और ज्यादा ब्लड, व्हेन ज्यादा ब्लड कम्स, देयर इज इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. तो इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, व्हाट हैपेंस, कैपिलरीज लीक फ्लूइड, एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है. व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, द ब्लड फ्लो स्लोज, धीरे से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है. और क्या होता है, लीक्ड प्रोटीन रिच फ्लूइड इन टिश्यू स्पेसेस. जब when there is leaked protein rich fluid in tissue spaces, pain and swelling takes place. फिर कैपिलरीज लीक करता है, लीक्ड क्लॉटिंग प्रोटीन्स आ जाता है. देन कटने के ऊपर क्या होता है, ब्राउन वॉलिंग ऑफ प्रोसेस चालू हो जाता है, क्लॉट फॉर्म करना चालू हो जाता है. हीट से क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल्स, एंड दैट कॉजेज हीलिंग. पेन स्वेलिंग से क्या, व्हाट हैपेंस, देयर इज पॉसिबल टेम्पोररी लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स. क्लॉटिंग प्रोटीन क्लॉट कर देता है, टेम्पोररी फाइब्रिन पैच होता है. दिस इज ऑल हेल्प्स इन द हीलिंग. अब दूसरा, रिलीज ऑफ ल्यूकोसाइट इंड्यूसिंग फैक्टर से क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है. व्हाट हैपेंस इन ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, and neutrophils be attracted over there. All of these, they migrate to the injured area. Then margination takes place where the leukocytes cling to capillary walls. ब्लड का वेसल्स के कैपिलरी में क्लिंग कर जाता है. देन डायापेडेसिस टेक्स प्लेस, वो माइग्रेट करना, मूवमेंट चालू होता है. द न्यूट्रोफिल्स दे स्टार्ट टू मूव, मूवमेंट. द ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, दे पास थ्रू कैपिलरी वॉल्स. फिर फैगोसाइटोसिस कर देता है, डेड टिश्यू सेल्स, बैक्टीरिया, पैथोजेन इसको खा लेता है, पस फॉर्म करता है. पस निकल जाता है, एरिया क्लियर्ड ऑफ डेब्रिस एंड रीजन हील्स. सो क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So this is what I have explained. Phagocyte mobilization, margination, leukocytosis, the same thing, diapedesis, chemotaxis. So what is phagocytic mobilization? ये पिन प्रिक हुआ है. न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम द ब्लड एंटर फ्रॉम बोन मैरो, कैपिलरी वॉल, ये ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाता है.
मार्जिनेशन, घूमना चालू करता है, एक जगह रुक जाता है, न्यूट्रोफिल माइग्रेट टू एरिया ऑफ इंजरी, फिर डायोपेडेसिस करके बाहर निकलता है एंड केमोटैक्सिस होके ये रीजन में आ जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन लाल हो जाता है, फूल जाता है। And macrophages clean up cellular debris and pathogens. If pathogens were associated with the injury, activation of complement बाद में पढ़ाता हूँ, occurs and elements of adaptive immunity join the process. Adaptive immunity क्या होता है? Specific होता है। अभी क्या हो रहा है? Innate, non-specific. Now, viral replications. Now, virals lack metabolic processes. They release nucleic acid, RNA, or DNA into the cytoplasm. The information on the nucleic acid is incorporated in the cell's DNA. Normal cellular mechanisms then produce viral structural components. So what they do, they put their RNA and DNA inside the cell, integrate with the host genome, and then using the cell's machinery, the virus produce their own proteins. Sometimes cell को मार भी देता है, they kill the cell. So antiviral proteins like interferons are released and complements are there. Now we are talking about what is interferons. Some cells produce and release interferons when invaded by virus. The released interferons, they stimulate nearby cells to produce proteins, PKR for example, that interfere with viral replication by disrupting protein synthesis and the ribosome. This interferon is always not virus specific. Now let us look at interferons. वायरस न्यूक्लिक एसिड, वायरस है, इट एंटर्स द सेल, वायरस बनाना चालू कर दिया, यहाँ पे घुस गया, सेल के मशीनरी यूज किया एंड इंटरफेयर, इमीडिएटली व्हेन इट्स इनसाइड, इंटरफेरॉन जीन्स आर टर्न्ड आउट, देन इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज द फर्स्ट सेल। तुरंत जब इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गया, द सेकेंड सेल जो है, they all immediately the interferon it releases antiviral proteins. So एक को तो बर्बाद किया, दूसरे को बर्बाद होने से रोक दिया। मैं तो गया यारो, लेकिन मैं बाकी देशवासियों को बचा दिया। ये इंटरफेरॉन रिलीज किया और ये एंटीवायरल प्रोटीन को कर दिया। अब कोई वायरस सेल को अटैक नहीं कर पाएगा, बाकी सेल सेफ है। ये मर गया, ये गॉन गॉन केस, इसका हो गया, लेकिन ये बचा दिया, मतलब बाकी को बचा दिया। क्लियर सो फार? Yes, sir. What is interferon? Okay. Now, we come to complement. What is complement? Complement is a group of plasma proteins, around 20, that are activated in the presence of foreign substances. Complement activation enhances and amplifies inflammation. Bacteria and some other cell types are lyzed by complement activation. Complement activation enhances both innate and adaptive defenses. ये बेसिक है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। एक 20 ग्रुप प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वो क्या किया है, वो एम्पलीफाइड इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। बैक्टीरिया एंड सम सेल्स दे आर लाइज समटाइम्स बाय दिस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस। ये बोथ इनेट एंड एडेप्टिव डिफेंस को एनहांस कर देता है, हेल्प करता है। Two types of complementation activate pathway. One is the classical pathway, it requires antibodies, and इसमें क्या होता है, antibodies bind to target antigen. Complement protein C1 binds to the antigen antibody complex, इसे कहते हैं complement fixation. This is happens, and then you have the alternative pathway. Complement factors interact with microorganism glycocalyx. वो जो ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सेल सरफेस देखा है उसमें बाइंड करता है, डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट उसी पे अटैक कर देता है। So both pathways lead to a cascade of protein activation, leading to activation of C3. अब क्या है ये बताता हूं। C3 is the final common pathway. Both classical and the alternate pathway comes to the C3. दोनों एक पाथवे में आता है, फाइनल कॉमन पाथवे। What it does, C3 cleaves to form C3A and C3B. These are the steps.
C3A एंड C5A ये दोनों क्या करता है? दे एनहेंस इन्फ्लेमेशन बाय इंक्रीजिंग हिस्टामिन जो सर दर्द करवाता है, इंक्रीजिंग वेस्कुलर परमिएबिलिटी ब्लड वेसल के अंदर घुसने का परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, एंड इट स्टिमुलेट्स केमोटैक्सिस अट्रैक्शन टुवर्ड्स केमिकल्स. C3B coats bacterial membrane supplying adhesion points. This is known as opsonization. C3B initiates the cascade formation forming the membrane attack complex. MAC form करता है. MAC क्या करता है? होल. अब ये पिक्चर में दिखा देता हूं. ओके, पहले देखते हैं क्लासिकल पाथवे. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्लस C1 का कॉम्प्लीमेंट, C4 कॉम्प्लीमेंट, C2 ये सब डिफरेंट प्रोटीन्स का नाम है. एंड ऑल्टरनेट पाथवे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल पॉलीसैकेराइड जो ग्लाइकोकैल्स, एज वेल एज फैक्टर बी, फैक्टर डी, फैक्टर पी. व्हाट दे डू? C3 को एक्टिवेट कर देता है. C3 breaks up into C3B and C3A. C3B along with C5B, C6, C7, C8, C9 and C5, it causes inflammation, stimulates histamine release, increased blood vessel permeability, chemotactic attraction of phagocytosis. C3B क्या करता है? ऑप्सोनाइजेशन. इट कोट्स द बैक्टीरियल सरफेस पे कोट कर देता है. इसे क्या करता है? टेस्टी बना देता है फैगोसाइट्स के लिए. अब ये सब बन के मैक बन गया. मैक क्या करता है? एक पैथोजन के अंदर एक होल बना देता है. होल बनाता है, क्या होता है? पैथोजन के अंदर से जो सब सेल मटेरियल है, इट गोज आउटसाइड एंड द सेल डाइज. क्लियर? Yes, sir. ओके. Then there are C-reactive proteins. Doctors will always ask if you have got CRP का टेस्ट करो. They are produced by the liver in response to inflammatory molecules, and they activate the classical pathway binding to membrane and activating C1. If your C-reactive CRP positive आ गया था, उसका मतलब तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन है. Then you have fever देखता है. फीवर मतलब क्या? इन्फेक्शन है. You have to take medicine. Your body is fighting. You need help from medicines also. तो ये इनेट हो गया. नेक्स्ट डे आई विल टॉक अबाउट एडाप्टिव डिफेंसेस. ठीक है? Okay, sir. ओके. Yes, sir. तो ये इनेट को प्लीज स्टडी दिस इनेट. अच्छे से पढ़ाई करना इसको. एम आई विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो डू यू पीपल हैव गॉट एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. हाँ बोलो, प्लीज टेल. Sir, you said there was a point in NK cells that it is non-specific to no self. So what did that mean? नॉन स्पेसिफिक टू नॉन सेल्फ Yes, sir. मतलब एनीथिंग, इट मीन्स एनीथिंग which is non self, nothing in তোমার শরীরের কিছু নয়, ওটা বাইরে থেকে কিছু এসেছে, যাই কিছু এসে থাকুক বাইরের থেকে, ঠিক আছে? Okay, sir. Anything which has come from outside. Because say for example, if an antibody is made against your own protein, you will be destroying your own cells. For example, arthritis, you are destroying your own self antibodies. Autoimmune disease. Yes, sir. So that is self. So non self, anything matlab self non self recognition is the first thing about immune system. अपना चीज को अटैक नहीं करूंगा, बाहर से कुछ भी आया आई विल अटैक. ठीक है? दिस इज व्हाट आई मीन नॉन स्पेसिफिक. एंड नॉन स्पेसिफिक मतलब एनीथिंग, इट इज नॉट स्पेसिफिक मीन्स अगेंस्ट मलेरिया, अगेंस्ट कोविड, व्हाटएवर, दैट इज स्पेसिफिक. यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिकली. दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज अगेंस्ट कोविड. नॉन स्पेसिफिक वो कोविड भी है या इन्फ्लुएंजा भी हो, वॉट एवर इज कमिंग इनसाइड योर बॉडी. नॉन स्पेसिफिकली जनरल, it can be a virus, bacteria, and interferon is released. Your body is basically a barrier.
उसको भी अगर even if it breaches that, then you come to the question of specific, একদম কোভিড কে লিয়ে, একদম কোভিডের জন্য। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? Yes, sir. ঠিক আছে, আরো কোয়েশ্চেন আছে? Any more questions? No, sir. Okay, then the Thursday offline plus online both. Okay, যারা sir. আসতে those who are unable to come on come to my house on Thursday, please join online mode. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And those who are able to come, please do come. You are most welcome. I have more space in my house now. And again, please don't be early. I will not tell, you can come 10-15 minutes early, no problem. Okay, because there is space for you people to sit down. Sir, timing? Timing 9 o'clock. Okay, sir. Okay.